Good morning, children. How are you all? All are good? So, children, let's start this session with a prayer. Okay? So, join your hands and get ready for the prayer. Let's start, children. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasme Shri Guruve Namaha. Very good. So let's start with the literacy subject, children. Today we will learn one more new letter. Okay? The last letter which we have learned in the last lecture, tell me which was a letter? Q, right? हमने Q letter तक सीखा है. So now we will learn the next alphabet. What comes after Q? R. Very good. So first I will show you how to write uppercase and lowercase r, and then I will show you how to practice in this literacy book. Okay? So children, how will you write R? For uppercase R, capital R, you have to draw one standing line. Then हाफ लाइन तक आपको एक कर्व ड्रॉ करना है, कर्व टूवर्ड्स लेफ्ट, और इसी कर्व को टच करके यू हैव टू ड्रॉ वन स्लैंटिंग लाइन टूवर्ड्स डाउनवर्ड इन दिस वे. दिस इज योर कैपिटल, दैट इज अपर केस अल्फाबेट आर. स्टैंडिंग लाइन, कर्व टूवर्ड्स लेफ्ट एंड slanting line towards downward. Understood? Now let's see how to practice how to write lower case letter r. आपको सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे से आपको एक कर्व बनाना है. ऐसे एक छोटा सा कर्व बनाना है, नीचे की तरफ नहीं लाना है, सिर्फ छोटा सा ऐसे कर्व बनाना है. ओके? स्टैंडिंग लाइन and one curve. Understood? This is your upper case, that is capital letter R. Lower case, that is small letter r. Okay? Now I will show you how to practice in your 4 lines. Okay? So children, this is the page number 102 for letter R. Okay? So you all can see R for rabbit. R for rabbit. First we will trace and write. First line में आपको upper case that is capital R लिखना है. Second line में आपको lower case that is small letter r लिखना है. How will you write? You will start from the red line for upper case capital R. You will draw one standing line, then one curve towards left, then one slanting line towards downward. रेड लाइन से लेके बॉटम ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक कर्व टूवर्ड्स लेफ्ट और इसी पे स्लैंटिंग लाइन टूवर्ड्स डाउनवर्ड. ओके? इन दिस वे. दिस इज योर अपर केस, दैट इज कैपिटल लेटर आर. ओके चिल्ड्रन? इन दिस वे यू विल प्रैक्टिस. देन लोअर केस लेटर आर. लोअर केस आर आप सिर्फ ये ब्लू लाइन में ही लिखोगे, ब्लू लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए. ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन, देन वन कर्व छोटा सा, दैट्स इट. स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व. अंडरस्टूड? सी, इट्स वेरी सिंपल. इफ अगर आप करना शुरू करोगे ना, देन यू विल एंजॉय दिस कर्व. ओके? दिस इज योर लोअर केस लेटर आर, अपर केस लेटर आर. R for rabbit. इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे. Then what you will do here? Very good. You all know, right? You will take the stickers from the back side of the book, starting with the letter R, and you will paste it over here. R for ring. Ring. R for rocket. R for rose. This flower. Flower का name क्या है? Rose. Okay? Now start pasting the stickers. So you all can see that I have pasted the stickers. Now let's read the words. R for ring, अंगूठी. R for rocket. R for rose. R for rabbit.
In this way you will complete this page number 102, 102. Then come to the next page. In this page, page number 103, we will read the words starting with the letter R. Okay, look at this scenery, how beautiful it is, right? Which season is this? Rainy season, right? So let's read. R for Robin. ये जो bird fly कर रहा है ना, इसका नाम क्या है? Robin. R for Robin. R for rain. Rain यानी कि बारिश. Rain. R for rainbow. Look at this colorful rainbow. R for rainbow. मोस्टली रेनबो कब निकलता है? हमेशा बारिश के टाइम पे. रेनबो. आर फॉर रेनकोट. जब बारिश गिरता है तो आप क्या पहनते हो स्कूल आते वक्त? रेनकोट. बारिश से बचने के लिए, राइट? लुक एट दिस गर्ल वेयरिंग अ पिंक रेनकोट. रेनकोट. आर फॉर रीडिंग. See, these two girls are reading, right? They are reading the books by sitting at home. तो ये जो एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? रीडिंग, पढ़ना. R for reading. R for rabbit. Look at this rabbit. Rabbit. One more time we will read the words. R for Robin. R for rain. R for rainbow. R for raincoat. R for reading. And R for rabbit. After finishing reading the words, turn to the next page. You all know now what to do over here. You have to write capital R in the blue boxes and small r in the pink boxes. After writing this, we will read the words. Okay, write the first letter of the following in capital in blue boxes and in small in pink boxes. So now first complete writing the uppercase and lowercase r, then we will read the words. So you all can see that I have completed this page by writing uppercase in blue boxes and lowercase r in small pink boxes. Now let's read the words. R for ring. R for rabbit. R for rose. R for rainbow. R for rocket. R for robin. Okay, in this way you will complete this page number 104. Then come to the last page. This is your page number 105, 105. What is given over here? Circle the words that begin with letter R. यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे वर्ड्स है. जो वर्ड R से शुरू होता है उसे आपको सर्कल करना है. ओके, जैसे ये R से शुरू हो रहा है, RAT, rat, तो आप ये सर्कल करोगे. Then RACE, race, you will circle this word race. Then ROBIN, robin. Okay, REAL, real. This rainbow. ROSE, rose. RICH, rich. Okay, ROLL, roll. RED, red. RABBIT, rabbit. See, in this way, in this page, you will circle all the words starting with the letter R. जो भी word R से शुरू होता है वो R ढूंढो और उस word को, पूरे word को circle करना है. ठीक है? In this way you will, with pencil only. In this way you will complete this page number 105. So children, I hope you all understood how will you practice uppercase and lowercase letter R and which all pages you will practice today in this literacy skill sheet book for letter R, right? Very good. Now remove your book and start practicing. Okay? Thank you. Bye-bye. Keep practicing.